Harshali, you're muted. You're on mute. Sorry, good evening. Good evening, everyone. Sorry, I've just unmuted myself. So, good evening and very happy new year. Welcome all. Welcome in this new year first webinar. Welcome from SNIC Rehab Foundation. Welcome from CRC. I'm the parent, I'm the mother of two who are on spectrum first, and then the director of the SNIC Rehab Foundation. That I'll just quickly go through what we are doing and SNIC. So, uh, yeah. So, Snake, what is we have vision basically to empower parents with special need to ensure that they should be available with the all the right kind of a knowledge, and then they should go in the right direction with the help of right professionals. So we are always trying to bridge the gap between professional and the parents. So I am here. I have set my motto is to educate parents, develop their perspective towards the right kind of interventions and treatment. For that, we are running various programs like awareness programs, parent empowerment program, and various knowledgeable uh, sessions for them. So here today, we are like very happy to bring you that today's topic is New Year resolution of my special child, and for that we have CRC with us. As always, they are so supporting, and we are lucky to have you here. So I would like to hand over further to Dr. Nikita ma'am to proceed further. Yes, ma'am. Thank you so much, Harshali ma'am, and a very happy new year to all the parents. Like Harshali ma'am said, yes, along with SNF rehabilitation, we are going to be working today. CRC is a conjoint, so we are going to be taking a new topic, a new ray of hope for all the parents in the starting of the new year. So we all should have few, resolutions when it comes to our child. So first, as a therapist, I would like to say a few things. What I would feel that the resolution of the parents should be to be more inquisitive. So when we say the word inquisitive, never stop asking questions. You should be always wanting to know more and more about your child, and you should be free enough to ask the question to your respective therapist to understand why, when, what, and how it has to be done, which will be helping the development of your child every day. So this is how should be our New Year resolution. I would take great honor in introducing Dr. Sumit Shinde, a renowned occupational therapist who has been working in this field for more than 18 years, treating above 1,000 patients, in a year. So now it is more than 10,000 patients that he's seen about these years. And his expert to be having our resolutions, but will also give us an idea okay, how your schedule of this year should be and what you should further seminar to Dr. Sumit Shinde. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nikita. Thank you, Harshali. Uh, Good evening, everyone. And am I audible properly? Yes, Yes. sir. Are you hearing any squawky noises from behind? Because my other side house, the some work is going on. I'm already auditory hypersensitive, so I may get disturbed, but I hope you are not getting disturbed with the sound. No, 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 no sound for us. Okay. Yes. Yeah, yeah, yeah. Good evening, everyone. Wish you a very happy New Year. And we are on a roll of this webinar series. Uh, last year means almost 2 months back, almost 4 months since we are on this webinar series calling Empower, where we are trying to ask many questions to ourselves. I am asking, we are asking as a therapist, I am asking many questions to you to get a clarity, get clarity. Clarity is a very very important word. Clarity एक बहुत important word है जो या एक एक्ट है जिसको जो जो हम कोई भी प्रॉब्लम में अगर जा रहे हैं तो अ, अ, उसका सोल्यूशन हम जितना हमारे प्रॉब्लम की क्लैरिटी होगी उतना सोल्यूशन आसान होता है, उतना सोल्यूशन निकालना आसान होता है।
और जितने प्रॉब्लम की क्लैरिटी होती है, राइटली सेड बाय डॉक्टर निकिता ने तो कंप्लीटली, आई मीन, ग्रेट, यू आर सिंपली अमेजिंग कि लेट्स बी इंक्विजिटिव, यस, लेट्स बी इंक्विजिटिव टू टू अंडरस्टैंड द क्लैरिटी, clarity about my child's problem, clarity about the society, what is happening in society, clarity about what is going to be in the future, clarity about what where my child is now, clarity about where I can where I me my as a person, as a human, as a parent, as a professional, as a social, as a person in the society, as a family person, as a father, as a mother, as a brother, as a sister, how I'm going to place myself, uh, you know, what is my exact role going to be in for my child in my family. So when we say, I mean, when Harshali asked me कि new year है, तो you just say कि new year resolution about in special need parents. तो कहने के लिए तो मैंने बोल दिया कि हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, अरे हाँ, न्यू रेजोल्यूशन इन मैनेजमेंट थ्योरीज, न्यू रेजोल्यूशन लाइक गोल सेटिंग्स होता है, आपको एक साल का प्लान करना होता है, आपको आपको गोल्स रखने होते हैं, आपको स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस स्वॉट करना होता है। ये बहुत सिंपल है मैनेजमेंट थियरीज में, ये बहुत सिंपल है, शायद किसी देश को चलाने के लिए भी, शायद किसी या शायद बहुत बड़ी कंपनी को चलाने के लिए स्वॉट मैनेजमेंट थियरीज बहुत मैटर करती है। बहुत ही इजी इजी वे है, मैं उसको इजी कहूंगा, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, बट के सामने की एज अ स्पेशल नीड पेरेंट, व्हाट शुड बी माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ओके, सो 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 शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एनीबडी वांट्स टू से कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? आई वुड लाइक टू कीप इट मोर ओपन बिकॉज why I am eligible to say this lecture, to express in front of you all, is not because I am an expert in this field, not because I am a therapist. I am experienced, um, uh, come from various backgrounds of uh, expertise with respect to psychology, with respect to occupational therapy, sensory integration therapy, many aspects of the approaches. But because I'm a brother of a special child, I have seen my childhood, how my parents have gone through. As a brother, as three brothers, how we went through uh, this the life in last 40 years. So I would like to take the notes from my life to express the resolution, because every year there was a different challenge. Every year, every time, every day, challenges were different in the society, challenges were different in the school, challenges were different in the family, challenges were different in the financial aspects, challenges will be difficult in the with respect to family conditions, inside family, intra family conditions, or inter family conditions. So there are different challenges we all go through, but especially when it comes to a child with special need, a child who's having some developmental behavior or learning concerns, uh, the challenges gets integrated. Challenges get integrated because child is something. Child is someone who's a catalyst, who acts as a battery, who for families happiness, families, I will say, uh, it's like I mean today, I mean afternoon I came from a long traveling. I almost drove 800 kilometers today last night. But when I was traveling 800 kilometers, I drove last night, and till today 12, 11, 1 o'clock I came. Uh, Driving was not a problem for me. I can drive for long. I can drive. I can uh, 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 as per my energy and all. But traveling 800 kilometers throughout the night and this thing half daytime. It is something like how we go ahead, how with whom I'm traveling, how I'm traveling. What I'm doing in that outing. What I'm talking with.
what people are talking with me, what thoughts are getting shared, how we are contributing together. We are finding that happiness, we are finding that love in the family. Me, my two kids, and my wife, we had gone for pilgrimage last. तो हमारा सोशल ईयर रेजोल्यूशन था कि हम लोग फर्स्ट सेकंड को हम लोग पिलग्रिमेज जाएंगे, तो 3 days we were out. uh, but it's not about journey. It's about how companions are in the journey. Sometimes the big journeys become shorter. Sometimes the short journeys become longer based on the companionship. Coming to the point, companionship. The child with us, sometimes he's suffering from some kind of a behavior issue, some kind of a learning issue, some kind of a developmental or some kind of a expectations what we want the child to do, and he's not able to perform. He's not able to do in that aspects. The journey of life, sometimes it gets stuck, sometimes it gets slowed down. Sometimes we feel that what I'm doing, where why I'm in this situation. And in that, uh, yeah uh, in that, you know we uh, we become a different people. We become, as a parent, maybe in college days, during marriage, we are a different people. But when the child gets diagnosed with some kind of a disability, some kind of a dysfunction, you know all our life changes, all our uh, uh, surrounding, our inner mental peace, I will say, our uh, comes at a halt. And I have seen, there are many people, uh, in my career, in last 18 years of 19 years of career, I have seen people are on a halt since many years. I know, I spoke to a mother at the age of 28 years, and she comes to me ki, I have heard your name. Can you help me achieving my goal? Can you help my child to write? I mean, at the age of 28 years, he should write. I mean, what you're doing? No, no, no. I'm trying my best. I will make him write. Somehow I will do this. It's not about writing and education. It's about we come at a halt. हम लोग एक फिक्सेट हो जाते हैं किसी किसी परफॉर्मेंस को लेकर, किसी गोल को लेकर, किसी चाइल्ड के एबिलिटी को लेकर, या और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एबिलिटीज होती है किसी के साथ कंपैरिजन किया हुआ, या किसी के साथ या हमारे हमारे एक्सपेक्टेशन से आया हुआ जो एक एक मेंटल फ्रेम है, वो हम चाहते हैं बच्चे से निकलवाना चाहते हैं, या बच्चे को हम लोग बहुत कष्ट करना चाहते हैं, हम लोग बहुत मेहनत लेना चाहते हैं, चाहिए वो डेवलप करना चाहिए. When I went through this topic, ki how what kind of a resolution I should have in this coming year, as a special need parent, or if there is a child suffering with some kind of a developmental concerns, you know, it definitely doesn't match with the some kind of a management theories. It matches with the I would like to connect it with the spirituality. I would like to connect it with something very very different, way of life. Because of uh, which I will just try it out, because I think पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार किसी ने ये टॉपिक लिया होगा, हर्षाली, that new year resolution for for special need parents. But I want your uh, uh, answer for this. Um, and there are certain uh, topics which come from the evidences, and there are certain topics comes from the experiences. I think this topic is more of a experience driven rather than evidence driven, because every child's evidence is different, every child's family aspects are different, every family is different. So what I believe is, let's together हम आज सब मिलके इस टॉपिक को डेवलप करेंगे. uh, Before that, I want what people are expecting from me about this topic. Only question, one liner. Don't try to be this thing, but you can ask me. You can add if Uh, somebody wants to. Sir, we have one or two lines in chat box. Okay. Like you said, what you want to learn from me is like focus on connection, supporting child development with family, society, religion, and also from our own known ones.
That's what we want to learn from you, sir. Also, mental peace, self-care, prioritizing rest, and accepting help. That's amazing. That's amazing. And we want our child to settle in school and social. Yes. Also, advocacy on IEP while emphasizing on flexibility and celebrating small wins over perfection. Right. That's amazing. Amazing. Yes. Which therapy for communication, wisdom from your experience, sir हिंदी में समझाए नहीं समझ में आ रहा है हमें. Most of the time, yeah. Um, there are two different aspects in our life. One is a relation, and second is a self. You know, as a human, we have two different. I am Sumit. I am Sumit Shinde. You know, uh, occupational therapy is my profession. Okay, my religion can be is different. My family aspects are different. You know, my family values are different. Okay, I am Sumit Shinde. I am because of certain. Just a moment. Huh. Uh, I am a product of my own experiences in my life. I am a product of my abilities in my life. I am a product of uh, what what decisions I took in my past life. Yes. So I am a very different thing. I am a very different than my Dr. Sumit Shinde is a different person. Dr. Sumit Shinde is evolved from his education, from his experiences, from his examinations, from his workplace. Dr. Sumit is a different human being. Sumit Shinde as a father is a different human being. Sumit Shinde as a father is a father of two kids is a different human being. Dr. Sumit Shinde as a boss in a clinic having more than 100 therapists and is a big team and child learning center, child rehab center organizations. Okay. I'm a very different person. Okay. My resolution for those things will be different. As a profession, my resolution will be different. You know, as a father of of my son, my resolution will be different. As a father of a daughter, my resolution will be different. And me as a person, as a human, okay, my resolution will be definitely different. Do you agree with me? आपको समझ में आ रहा है? Yes, because I have to cut myself from all these things first. अगर मैं खुद को इसमें से अगर बाहर निकल पाया, ओके, तो मैं पहले खुद के बारे में सोचूंगा. Who am I really? You know, because most of the time, being parents, हम लोग एक पैरेंट के प्रोफेशन में इतना ज्यादा अंदर जाते हैं, इतना ज्यादा जाते हैं, और उसमें से कुछ अगर प्रॉब्लम अगर ये आ गया, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी पेरेंट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट स्पेशल नीड चिल्ड्रन पेरेंट्स. कभी कभी कुछ मदर्स होते हैं, वो अपना अपना खुद का जो सेल्फ है वो कंप्लीटली फॉरगेट करके, यू नो, दे ट्राई टू बी अ पेरेंट ऑफ दैट चाइल्ड. They try to be a parent of that, and they try to look for the performance of the child. एंड बिहाइंड दैट परफॉर्मेंस वो बच्चा बालवाड़ी से लेके ग्रेजुएट होने तक वो कंप्लीटली उसके पीछे पड़ते. दैट मैनी पीपल लिव द सेल्फ बिहाइंड. वो खुद क्या थे भूल जाते हैं. ये तो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी पेरेंट इन द वर्ल्ड. बट when it comes to a special need parent, I mean, it's a very devastating condition, which I cannot explain definitely, but I have seen it, in my childhood, in a glimpse, in very much glimpse, because my parents did not bring too much to me for what their parenting struggles was. But I saw small struggles, family conditions and all. Okay, so लेकिन कुछ लोग इसमें इतना ज्यादा मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, बह जाते हैं. पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने के बाद खुद की पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं. अब जब हम खुद की पर्सनैलिटी को जब भूल जाते हैं, वी कैनॉट थिंक फर्दर. हमें आगे सोचने की ताकत, when someone gets very much entangled with problems, uncertainties in the future, तो आप रेजोल्यूशन नहीं बना सकते. हम
वो गोल्स नहीं सेट कर सकते. We cannot think further, we cannot think 2 days beyond, and then we get entrapped. हम एक पिंजरे में फंस जाते हैं, यू नो, जहां पर हम जो भी कोई भी बोलेगा हम उसका सुनना शुरू कर देते हैं. Do you all agree with me? I mean, I don't know. This I'm not talking from the occupational therapy point of view, but yes, definitely occupational therapy has occupation word itself comes from the occupation. Who am I and what the person is, you know. But if any person is operating from some kind of a trouble, some kind of a problems, हमारी decision making ability हम लोग खो जाते हैं. हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग decision maker बन सकते हैं. हम लोग we can find solutions on it. एंड जब हमारी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दोस फिक्सेशन, बिकॉज वी आर एवरी डे वी आर लिविंग, every moment we are living, you know, then what happens is we get caught by somebody's suggestions, by something coming from outside, something coming from in family, something coming from some kind of a parent, or it becomes a cluster of too many things, and that further makes me more makes my life difficult for me and my child, you know. इसमें ये सब में न्यू ईयर रेजोल्यूशन ढूंढना is something like बहुत बड़े समंदर से एक कोई छोटी चीज ढूंढना होता है. बट आई वुड लाइक टू ब्रिंग क्लैरिटी ओवर हियर. हम लोग, इसलिए मैंने कहा कि जहां पर क्लैरिटी है, बट आई हैव सीन देयर आर मेनी पेरेंट्स, आई हैव सीन माय पेरेंट्स who brought that clarity, who left the things at right time, who acquired the things at right time, and being very difficult child, my brother is doing relatively very good in his life, very much independent. I don't want to say financially, I don't want to say professionally, but I would like to say from the mental peace, from the family aspects, doing really very good. And I'm very much proud of my parents, what they have done with him, or what kind of right decisions they took, including me in my when I uh, became a decision maker in the family. So we took right decisions. So from that, I would like to bring the things over here. Um, let's take a poll over here. Yeah, let's take a. Can we have a poll, Harshali? I want to ask you all, Yes, with respect to this problem, what kind of a problem? Let's take some big problem that was stuck. हम कोई problem हो सकता है कि बाबा my family condition has become a problem, और कोई बोल सकता है कि my child's communication is a problem. Or let us talk about child now. I'd like to come that self also, because this lecture I cannot take in one session, but I will be continuing this lecture in the next time also. So let's take about child. What problem I'm going through right now. Let's take this. So what is your biggest concern about your child right now? Okay, so please fill it. Yeah, poll will be live. It's live. Yes, people are Yes. filling up. I Yes. can see. Yes. Another 30 seconds. Fast. Yeah, 26 or 42 people have filled. I want more. Let us understand. Yes, everyone, come on. Fill up the poll. I hope everybody can see the poll. It is the first question. I'm not going to speech में क्या problem है. You just write, because you are a decision maker. I just want to give you clarity how to take decisions in this particular thing. With respect to child, with respect to self, we will definitely discuss.
Okay. Out of 31, still 7 are left. Okay. I think can we end the poll? Fine. Yes, we can stop here. So out of 41, 33 has answered. And Can I share the yeah, results now? yes, this is results. Yes. So I guess everybody can see the results. So let us say out of 33 people, 12 people are suffering from some kind of a speech and communication. So children are 12 people, not children. I will not say child is good in communication. We are not able to communicate with the child. That is a problem. Okay. So, or child is not able to convey, or we are not able to understand their needs, their expressions and all. So, let us take from our perspective. So, I am not able to develop child's communication. I am not able to develop child's speech, or I am not able to understand his behaviors. I am not. Behavior is all about understanding the need. So, I am not able to understand the need of my child. I'm not able to regulate him, or I'm not able to, specify him, or he's not able to make me understand okay, what exactly he wants or she wants. So 10 people are saying that behavior and emotional regulation is their biggest concern. 4 people have learning and academics. 6 people have concerns about independent and daily living skills. And one says that I feel confused about many things. I mean, I'm damn sure there are many of you are come in the fifth category that confused what exactly I want. Okay, because uh, okay. Now I would like to ask you, will you write it down? Everyone, write it down. If that is your concern, okay. So speech, communication, social interaction, your child's concern. You know, what you're doing at this moment. Write down five things in your sheet. आप अपने पेज पर लिख लीजिए कि what 5 things you are currently doing in 2025 what you are doing. आप उसके बारे में उसको डेवलप करने के लिए या उसमें से बाहर निकलने के लिए उसको ओवरकम करने के लिए what you are doing, what measures you have taken. I'm giving you 5 minutes. You can write down 5 lines about it. What strategies you have done to overcome it. ये अगर जो मेरे प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम के लिए मैं फिलहाल मेरे प्रयत्न क्या है, मैं कौन से एफर्ट्स ले रहा हूँ. ओके. Have you done? Now write it down. Out of all those things, out of those 5 things, have you done, everyone? You can unmute yourself and say that yes, I have done. What kind of efforts you are taking to work on those problems, to work on those things. Hello. Yes. Yes. Right. So now आपको ये लिखना है, उस 5 प्रयास अगर आपने किए हैं उस सामने आपको ये लिखना है कि हाउ मच दे आर हेल्पिंग यू आउट. ओके, हाउ मच दे आर हेल्पिंग यू आउट. जो भी आपने स्ट्रेटेजीज की है तो सबसे पहले अगर मैं स्पीच एंड कम्युनिकेशन के बारे में कहूंगा कि आई एम वर्किंग ऑन हिज ओरल मोटर टेक्निक्स, then I'm giving him information about everything happening surrounding, yeah, my work on play and communication theory, and you have to play with him and try to transfer your thoughts, ideas, beliefs where you and
child will be sharing a lot of emotions and बहुत ज्यादा आप हंसी मजाक एंजॉय कर रहे हो उस सेशन को। ये मेरी थर्ड स्ट्रेटेजी है। फोर्थ स्ट्रेटेजी है कि मैं उसको फ्लैश कार्ड से एक एक चित्र सिखाती हूँ और उसको एक एक सिखाती हूँ। नाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन कि व्हाट आर वर्किंग फॉर यू इन लास्ट ईयर। अगर ये आपका प्रॉब्लम था तो आप उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको मदद कर रही है। Okay, somebody's written, Mrs. Purva writes, we don't know, just putting efforts, not knowing results from where. Okay. This is Okay, but what happens most of the time. Parents just putting efforts because they don't know where to go, but they're doing lots of things. yeah, I really appreciate Mrs. Purva Jain over here that you are actually very much, very, very upfrontly you are saying this because many people don't accept it. Many people don't want to accept it, you know, but you are accepting it. That's accepting the fact itself is a first step of going ahead in the life. Let me tell you, okay, what is working and what is not working. If I don't know what is working and if I don't know what is working and what is not working, that means I am not observing. I am not understanding. I am just running. I'm just running, but I don't know where I'm running towards. You know, this is this most of the parents are actually going from. Hmm. Anybody wants to share? Okay, what is your concern and what measures you are doing? Actually, sir, I was working for his speech clarity. He's Ah, Down syndrome kid of 8 years. So I was yes. working for his speech clarity. The only thing is that I don't know from where I am getting the results, but exactly I also don't know how much I am getting it. Like I am expecting 80% and he's now I can't evaluate him. So it's like that. Like I can understand our 7 people are understanding from our neighbors and all. So he can like everyone can understand him in his What is, near future. It's like that. but it is not And matching he with even try very best expectation. to explain everything from his point of view. Yeah, but it is not matching with your expectation. You want to say it is not matching with your expectation. Can we say that? मॉडल एंड वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि मैं इसके ऊपर इतना एफर्ट डालूं कि जो मेरे मन में एक आइडियल सिचुएशन है वहां तक उसको लेके जाना है। ये this question is not for मिसेस पूर्वा ओनली बट दिस क्वेश्चन इज एवरीवन कि अगर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं तो क्या हमारे गोल्स हैं उस प्रयास के लिए या सिर्फ हमें प्रयास करने के लिए बोला है और हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आउटकम क्या है हमें नहीं पता। नाउ वी मे बी सेटिस्फाइड इन द फैमिली की ओके वो अपना एक्सप्रेशन कर रहा है वो हम जो बोलते हैं उसको समझ में आ रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। आई डोंट वांट टू बी वेरी केस स्पेसिफिक बट मैं इन जनरल ये बोलना चाहूंगा कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं क्या उसके लिए कुछ गोल्स है, क्या उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम बाउंड यू नो एक टाइम बाउंड चीज है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम लोग अगले 6 महीने में इसके ऊपर काम करेंगे। अगर ये होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है और आई हैव टू डिस्कस विद माय थेरेपिस्ट और नॉट 6 months, it's supposed to be 3 months. I'm going to discuss with my therapist, I'm going to discuss with my mentor. Okay, I'm going to discuss with the professional and I'm going to work on it. I'm giving this medicine to my child since last 1 year, but what is the outcome of it? I want to discuss. Or did the professional discuss with you? Is the professional is discussing with you? ठीक है, I'm going to start working on a child. This is supposed to be my goal. अगले 3 महीने में ये मैं करने वाला हूं, ये आप भी करोगे और हम दोनों करके यहां तक हमें पहुंचना है। I would like to uh, ask everyone, how many of you, if Harshali can create a poll, you can create it. How many of us are working on goal? हम लोगों में से कितने लोग ये गोल्स के अनुसार इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं या सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं?
Okay. Okay. Am I working on goals with respect to problems? One answer is yes. Second answer is no. Yes, ready, Harshali? Yeah. Am I working on goals with respect to the problem or no? I'm just working. Out of 41, 22 have replied yes. At least I need minimum 30, 35 people so that we can understand more better. तो अगर मेरे बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लर्निंग इश्यूज, तो मैं उसके ऊपर प्रयास कर रहा हूँ। क्या मेरे प्रयास गोल ओरिएंटेड है या सिर्फ मैं उसके ऊपर प्रयास कर रहा हूँ? Okay. So around 30 people have entered, and then there is a tie between 15 are working on goals and 15 says, no, there is no goal. This is my biggest problem and I'm just working. Okay. Expecting that many people will say, ki, no, I'm working on goals. I should ask this question, ki, why there are no goals? I mean, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ इसके आधार पर कि मैं दो जगह पर जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैंने अपने साथ क्या लेना चाहिए और क्या 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 तैयारी करके जाना चाहिए। ओके, आई एम गोइंग टू लेह लद्दाख। ओके, मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ। या विल स्टॉप दिस पोल नाउ। आई एम गोइंग टू लेह लद्दाख। ऐसी कौन सी 5, 6, 7, 8 चीजें मैंने लेके जानी चाहिए मेरे साथ? ओके, इट्स द हाईएस्ट टॉप ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, लॉन्ग बहुत ज्यादा। अगर कोई गया है, या I'm going to Kashmir, let us say I'm going to Manali in this winter season, Leh Ladakh, Manali, North India I'm going. What I should carry with me? मैंने अपने साथ क्या कैरी करना चाहिए? Okay, jackets and boots, warm clothes, extra clothes, snacks, okay, eatables, that's nice, definitely from a Gujarati family. क्योंकि अगर आपको किधर भी बाहर जाना है तो always have some Gujarati family with you. आपके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। Yes or no? Medicine, first aid, Medicine, first aids. and sunglasses, sunscreen, hats, Yes, yes, warm clothes, jackets, sleeves, like that. yes, right. So warm clothes, I should take, medicines I should take. Okay. Jacket I should take, hand gloves I should take. It's going to be 0 degrees. अभी यहाँ पर map होना चाहिए. Okay, that's fine. Uh, okay. अब मुझे पता और कितने दिन का मेरा प्लान होना चाहिए, कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? लेट्स मेक इट वेरी वेरी सिंपल। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। ओके, 4 days, यानी कि आज गया और 3 दिन के बाद वापस आया। ओके, मिनिमम अ वीक, मिनिमम एक कम से कम एक वीक होना चाहिए। अगर जा रहे हो बर्फ में तो ऐसा नहीं हो कि फ्रिज में हाथ डाला और झट से आ गए, है कि नहीं? वो थोड़ा रहना चाहिए वहां पर। ओके, एटलीस्ट अ वीक आई एम सपोज टू बी देयर। ऑल राइट, एक 7 दिन के लिए मैं वहां पर होना चाहिए। तो तकरीबन आना जाना ये मिलकर 10 दिन का होना चाहिए, राइट? सो आई शुड इन्वेस्ट अराउंड 10 days, अराउंड। अगर ट्रेन से जा रहा हूँ, अगर मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ तो मे बी 7 days और 8 days मेरा होना चाहिए वहां पर ट्रैवल। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि इसी दिनों में अगर मैं गोवा जा रहा हूँ। ओके, गोवा इज समथिंग, बीचेस है,
बहुत सारी चीजें। तो मैंने क्या लेके जाना चाहिए मेरे साथ, ओके, और कितना दिन का होना चाहिए गोवा? What I should carry with me? Hat, okay, hat, sunglasses. That's nice. What else? Some funny clothes. Yes. 4 days sunscreen, shorts. Yes, floaters, swimwear. That's amazing. That's amazing. आई वुड लाइक टू पार्क ओवर हियर, यहाँ यहीं पर पार्क करते हैं। तो 4 दिन का होना चाहिए, सनस्क्रीन होना चाहिए, शॉर्ट्स, फ्लोटर, स्विमवेयर होना चाहिए, एंड शुड बी बैक ऑन 4th डे, या 3 दिन। गोवा में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगा। नाउ दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में, मैं नॉर्थ कश्मीर जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन बोथ? व्हाट इज कॉमन इन बोथ? हाँ एग्जैक्टली, ट्रैवलिंग। So traveling is common कि कहीं पर भी जाओ आपको ट्रैवल करना है। दोनों में कॉमन है ट्रैवलिंग एंड प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग है, ट्रैवलिंग है, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट तो होनी चाहिए डेफिनेटली। हम लोग सफर करने तो जाते नहीं है बाहर, हम लोग उसके लिए तो नहीं डालते। वी गो फॉर एंजॉयमेंट, फॉर मेंटल पीस, फॉर डेफिनेटली अचीव समथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इन नंबर ऑफ थिंग्स। दोनों में ट्रैवलिंग ये है। अब मुझे बताइए कि अगर प्रॉब्लम को मैं ट्रैवलिंग मानता हूं, ओके, या सोल्यूशन को मैं ट्रैवलिंग मानता हूं, ओके, और डेस्टिनेशन को मैं गोल मानता हूं, ओके, तो मैं ट्रैवल हम लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो क्या चांसेस है हमारे हम वहां पर पहुंच जाएंगे? और मेरे बैग में कुछ है ही नहीं, मुझे सिर्फ पता है मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत एफर्ट ले रहा हूँ, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ, मैं फ्लाइट में जाता हूँ, टिकट निकाला तो बोलते कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ट्रैवल करना है, बहुत ट्रैवल करना है। यस निकिता, डॉक्टर निकिता, ऐसे होता है कभी? यस सर। यस। नहीं। नहीं होता है ना? अगर अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों पता है? क्योंकि यस। दैट्स आई मीन वी हैव टू टॉक टू अ डॉक्टर, राइट? बिकॉज मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, ओके, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, स्टेशन आ रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, यू नो, वो पेड़ पीछे भाग रहे हैं, ट्रेन भाग रही है, लेकिन कहाँ जा रही है ट्रेन यही नहीं पता। what what will be my life? That is what most of us are living. Life without a goal is just there is no, it's like it's very difficult terminology, I will say. सब लोग मुझे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? Everybody is understanding me? Yes. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। आई मीन आई वांटेड टू टेक दिस डिस्कशन एट अ डिफरेंट लेवल, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, ओके? मैं एक मुझे 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 समझो गोवा जाना है। आई मीन गोवा इज समथिंग आई डोंट नो, बट गोवा इज माय फेवरेट प्लेस, सो मुझे गोवा जाना है, और मेरी ट्रेन छूट गई है, समझो, नो, और मैं अ, बस पकड़ने के लिए, माय फ्रेंड्स आर ऑलरेडी रीच्ड ओवर देयर, मैं बस पकड़ने के लिए जा रहा हूँ वहां पर, ओके? तो वहां पर कैन यू एवरीबडी इमेजिन मैं, डॉक्टर सुमित, आई एम स्टैंडिंग एट बस, ओके, कि खड़ा हूं जहां पर गोवा की बसेस आती है, ओके, शाम के 10-11 बजे है, मैं आई ट्रेन आई मिस द ट्रेन, एंड मैं वहां पर खड़ा हूँ। ये रियल लाइफ का सिचुएशन है, बट अभी सिचुएशन में आते हैं। और वहां पर एक बस आती है, वो आती है, चलो चलो अंदर चलो, बोला कहाँ जा रही है, बोलते पूना जा रही है, पूना जा रही है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे गोवा जाना है, तो वो बस चली जाती है, ओके। ऐसे 2-3 बसेस आती है, एक बोलती है रायगढ़ जा रही है, एक पूना जा रही है, एक शोलापुर जा रही है, कहीं एक नासिक जा रही है, ओके। तो बस मैं छोड़ता हूँ, क्यों 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 छोड़ रहा हूँ मैं बस? व्हाई एम लिविंग दिस बसेस, निकिता? Because it is not going to your destination. हाँ, इट इज नॉट गोइंग टू माई डेस्टिनेशन, ओके। अब 1-1.5 घंटा मैं वहां पर खड़ा हूँ, ओके, और मुझे आदत नहीं है वहां पर खड़ा रहना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी।
गर्मी है, बहुत सारी चीजें, और वहां पर एक मर्सिडीज बेंज की बस आती है। ओके, और वो बस से एक बहुत व्हाइट हैट पहना हुआ, व्हाइट क्लोथ पहना हुआ एक ड्राइवर, एक कंडक्टर उतरता है, उसका ड्राइवर भी वैसा ही होता है, बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही आलीशान, इट्स जस्ट लाइक एन अमेजिंग बस। और वो बोलता है कि आइए आइए, बहुत ही आलीशान बस है, बहुत जबरदस्त बस है, हमें जाना है, ये आपको बहुत, देखो एसी है, हर एक कंपार्टमेंट में एसी है, आपको स्लीपर कोच है, ये आपके सामान के लिए यहाँ पर जगह है, इसमें ये एसी का कंट्रोल ऐसा है, यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर चार्जर है, सब कुछ अच्छा है, आइए चढ़िए, बस में चढ़िए। मेरा उनको सवाल क्या होगा, मेरा उनके लिए सवाल क्या होगा? बोले चलो चलो जल्दी चलो बस में। मैं उनको क्या सवाल पूछूंगा? एनीबडी? हाँ, ओके, वेयर द बस इज गोइंग, ये बस कहाँ जा रही है, तो वो कंडक्टर बोलता है ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है, लेकिन ये बस बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है बस, अरे आइए, ये बस का, आप ये बस में बैठना चाहिए, आपको ये एंजॉय करना चाहिए, वो इसी जबरदस्त। मैं फिर से उनको पूछूंगा, ये कंडक्टर और ड्राइवर बोलते हैं नहीं, हमें नहीं पता ये बस कहाँ जा रही है, लेकिन आप ये बस में चढ़ जाओ, आपको बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आएगा, बहुत जबरदस्त ही आएगा, आपको ट्रैवलिंग का बहुत मजा आएगा। मैं फिर से उनको पूछूंगा ये बस कहाँ जा रही है? यस निकिता, यस हर्षली, एवरीबॉडी, यस। Yes, लेकिन sir. इसका उनके पास जवाब नहीं है, इसका उनके पास जवाब नहीं है। ओके, उसी वक्त एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एसटी, जिसको हम लोग कहते हैं एसटी, स्टेट बोर्ड, स्टेट ट्रांसपोर्ट का एक लाल डब्बा आ जाता है, हम लोग उसको डब्बा कहते हैं, डब्बा, लाल गाड़ी आ जाती है, एसटी की बस आ जाती है। वो एसटी की बस जब आ रही है ना, तो वो जब क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर से आती है, तो उसके पूरे कांच का आवाज आ रहा है, एंड वो आके खड़ी हो जाती है, राइट। कुछ कांच टूट गए, कुछ दरवाजा भी ठीक नहीं है, ड्राइवर भी ऐसे ठीक ठाक खाली इसमें, लेकिन कंडक्टर है, बोलते चलो चलो गोवा 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 गोवा, गोवा जा रहा है, गोवा जा रहा है, गोवा जाना है, गोवा जाना है। अब मुझे सब लोग बताइए, मैं कौन सी बस में बैठना चाहिए? वो आलीशान मर्सिडीज बेंज की बेस्ट एसी वाला बस, या नॉन एसी जिसमें से बहुत आवाज आ रहा है लेकिन वो गोवा जा रही है? कौन से बस में मैंने बैठना चाहिए, एसटी बस या मर्सिडीज बस? नॉन एसी बस गोइंग टू गोवा, राइट? यस। लाइफ में जब हम प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं, ओके, तब हमें अगर डेस्टिनेशन पता ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ सफर कर रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। यू विल एग्री विथ मी गाइस? तो जब कोई भी प्रॉब्लम्स के ऊपर जब हम काम करते हैं, और हमें पता ही नहीं कि अगले 2 महीनों में, अगले 3 महीनों में, मेरा दूसरा सवाल क्या होगा? मेरा दूसरा सवाल इन लोगों को क्या होगा, बस को, गोवा जा रही है, हाँ जा रही है, मेरा दूसरा सवाल क्या होगा इनके लिए, क्या होगा? कैन समबडी टेल मी, मेरा दूसरा सवाल क्या उनको होना चाहिए? टाइम, कितने बजे पहुंचेगी? मेरे फ्रेंड्स वहां पर गए हैं ट्रेन से, कितने बजे पहुंचेगी? यस और नो, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगी ये बस वहां पर पहुंचने के लिए? यस और नो, राइट? तो दैट मीन्स, अगर छोटे से छोटे ट्रैवलिंग के लिए, पिकनिक के लिए, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने क्या क्या लेना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ कि कितने टाइम में मुझे जाना चाहिए, मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कहाँ से कैसे जाना चाहिए, ये सब हमें पता है, मेरा डेस्टिनेशन का गोल मुझे पता है। तो हम जब अपने बच्चे के साथ जब काम कर रहे हैं, हाउ कैन वी से दैट वी आर नॉट वर्किंग ऑन गोल्स, वी आर जस्ट वर्किंग, वी आर जस्ट ट्रैवलिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? क्योंकि इसमें यू विल अचीव डेफिनेटली। नो नो नो, विदाउट अ गोल वी कैन नॉट अचीव, ऐसे नहीं हो सकता। अब अगर मैं एक कदम आगे डाल रहा हूं, तो मैं एक कदम जा ही रहा हूं, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो एक्चुअली डेवलप करना है, शायद उसकी जगह पर नहीं, जरूरी नहीं है कि उसकी जगह पर। जैसी वो 27 ईयर्स की मम्मी, बच्ची की मम्मी मेरे पास आई थी और बोली यू शुड वर्क ऑन हिज गोल, बिकॉज आई हैव हर्ड यू वर्क ऑन राइटिंग, आपका चाइल्ड लर्निंग सेंटर राइटिंग के ऊपर काम करता है, आई एम वर्किंग एंड आई हैव हर्ड योर नेम, सो प्लीज वर्क ऑन इट। तो वहीं पर क्या उसने ट्रैवल नहीं किया है? पूरा दुनिया घूम के आई है, ओके, लेकिन 27 साल तक उसका वही है, शायद गोल नहीं, वो डिजायर है, उसको गोल नहीं कहेंगे, वो डिजायर है कि उसको राइटिंग आना चाहिए। What is the difference between a goal and a desire? Can anybody tell me?
कैन एनीवन टेल मी कि डिजायर में और गोल में क्या फर्क होता है? मुझे ये चाहिए, डिजायर इज फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ओके, गोल इज अचीवेबल, ओके। डिजायर एक ऐसी चीज होती है, ऐसा थॉट होता है, ओके, जो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है, ओके। बहुत बार मुझे बचपन में या अभी भी तो थोड़े साल पहले भी जब सचिन तेंदुलकर खेलता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं भी बैट्समैन बन के आई वांट टू डू दिस, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। ऐसा मुझे भी बहुत आता था, अभी नहीं आता है, लेकिन पहले आता था, राइट? वो डिजायर था, ओके। बट गोल इज समथिंग विच इज स्मार्ट, विच इज सपोज टू बी स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, वो बहुत स्पेसिफिक होता है कि मैं अगले, ओके, 2 दिन में, ओके, या अगले 12 से 16 घंटे में मुझे गोवा पहुंचना है, ओके। इट इज सपोज टू बी एम मेजरेबल, तो मेजरेबल होना चाहिए। मैं मेरे फैमिली के साथ या मैं अकेला, ओके, और मेरी 2 बैग्स, हम लोग गोवा पहुंचेंगे कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में, मेजरेबल होना चाहिए, ओके। आर फिर रियलिस्टिक, मैं कल चांद तक पहुंचूंगा, ओके। ये ड्रीम हो सकता है, डिजायर हो सकता है, लेकिन गोल नहीं हो सकता, क्योंकि सच में पहुंचने वाला है क्या? तो उसके लिए अभी मैं रॉकेट में बैठना चाहिए। Coming from, I mean, just as a joke, apart from a joke, I know that we are talking about a resolution of the year, but clarity, what you said, clarity is very important. Unless and until I'm not clear, even if I reach there, I will not be satisfied. Because my expectation and my perception, these are two different things. Okay. So goal is something specific, it is measurable. Okay. A for achievable. ओके। आर फॉर रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, वो रियलिस्ट मेरे मेरे प्रॉब्लम के साथ या मेरे टारगेट के साथ, ठीक। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड होना चाहिए, मेरे 4 दिन में वापस आना चाहिए वहां से। सुमित सर कहाँ गए? अच्छा, फिर 2 महीने से वो गोवा में ही बैठे हैं, हमें नहीं पता क्या करना। डॉक्टर निकिता से, सर 2 महीने से गोवा में ही बैठे हैं, इट्स सपोज टू बी टाइम बाउंड। नहीं नहीं, 4 दिन के बाद आएंगे, 5वें दिन आपका कंसल्टेशन है उनके साथ। डॉक्टर निकिता, yes or no, Harshal? So somewhere it Yes. is, if we are working on some kind of a problem, we are going through some kind of a problem. We have to, we have to analyze that problem first. We आप गोल तभी रख सकते हैं जब आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी हो, ओके। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, अगर उस प्रोफेशनल को उसकी क्लैरिटी है तो वो आपको गोल देगा। अगर उसको क्लैरिटी नहीं है तो सिर्फ वो आपके डिजायर के ऊपर काम करेगा कि वो हाइपर एक्टिव है ना, वो बैठता नहीं है, ठीक है ये गोली ले लो, ओके। लेकिन उसके बाद अगले 4 दिनों में उसने तकरीबन 2 से 3 घंटा बैठना चाहिए, उसका फोकस ऐसे होना चाहिए, उसने ये होना चाहिए, उसके ये चीजें, टाइम बाउंड, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक, अचीवेबल, ये सारी चीजें अगर वो प्रोफेशनल आपको बोल रहा है, गो फॉर इट। नहीं बता पा रहा है, दैट मीन्स वी आर मेकिंग अवर चाइल्ड एज अ गिनी पिग, ट्रायल एंड एरर पे काम कर रहे हैं। एंड ट्रायल एंड एरर, ओके, स्टार्टिंग में बहुत सस्ता लगता है, ओके, लेकिन बाद में जाके वो पूरे लाइफ के लिए सबसे महंगी चीज होती है। ये मैंने पिछले 18 साल में देखा है, ये मैंने अपने बचपन से भी देखा है, यू नो, विथ रिस्पेक्ट टू माई ब्रदर, how trial and error works and how a specific goal works. Are you all getting me, parents? Because you cannot design a lecture for New Year resolution. Everybody's is different, but I can help you go there. But for that, we need a clarity. We need a clarity. And clarity comes from 2 ways. One is evaluation, evaluating the problem. अगर उसका स्पीच नहीं है, क्या नहीं, apraxia है, apraxia है, is it because of some kind of a selective mutism? There are n number of things in the speech. He's not communicating means what? He's not able to transfer his needs, he's not able to transfer his thoughts, he's not able to transfer his imagery.
or he's just speaking words but not able to transfer anything. It's just he can speak so many words but he's not able to communicate. The clarity is more important. प्रॉब्लम को सवाल पूछना आना चाहिए, वो प्रोफेशनल को भी, वो आपको भी. And that rightly said by Dr. Nikita, I will ask many questions. I will ask many questions. Okay, जब तक मैं उस स्मार्ट गोल तक नहीं पहुंचता मैं सवाल पूछूंगा. यू नो, अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको. आई मीन जस्ट दिस वाज जस्ट डाइवर्जन. क्योंकि अगर 30 लोगों में से 15 लोगों को गोल नहीं है, सिर्फ वर्क कर रहे हैं, सिर्फ वो गाड़ी, देखो गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी जा रही है. आई मीन पेड़ पीछे जा रहे हैं, अब स्टेशन आ रहा है, सब कुछ जा रहा है. लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जा रही है गाड़ी, और मुझे पता है कहाँ जा रही है गाड़ी. ये दो अलग अलग चीजें हैं. दोनों में भी ट्रैवलिंग नॉर्मल है, दोनों में भी एफर्ट्स नॉर्मल, एफर्ट्स उतने ही है. दोनों में भी थेरेपीज है, मेडिसिन है, स्कूलिंग है, स्कूल के प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट, सब कुछ सही है, वही है. लेकिन स्पेसिफिकेशन नहीं है. यू नो, तो बेस्ड ऑन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग ऑन गोल्स कि वेयर दिस गोल्स आर कमिंग फ्रॉम. ये आपके जो गोल्स है ये कहाँ से आ रहे हैं? Okay, is it coming from a professional? Is it coming from one of the parent in the school? जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि uh, uh, ऐसे ऐसे करो तो हो जाएगा. यू नो, या कोई कोई रिलेटिव ने मुझे बताया, या मैंने यूट्यूब पर देखा, या मैंने कुछ ऐप के ऊपर देखा, यू नो, या मैंने कुछ लेक्चर में सुना, उन्होंने ऐसा बोला तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से. दैट्स, या प्लीज कैन यू पुट दैट Shali, कि if you are working on this goal, where this goal is coming from? Does this have any evaluation? Does this have any kind of a background work, background problem solving, okay, background strategy, background evaluations based on the goals are coming as a monitor? You want me to create a poll? I have sent you just now. I have sent you another poll. Who influences your child's current goals? Yes, yeah. Write it down. Who influences your child's current goals? Is it your therapist, or school, or teacher, or some other parent, और there is some WhatsApp group जिसके ऊपर कहा गया कि ये महीने में हम सब लोग मिलके अपने बच्चे के सोशल इंटरेक्शन पर काम करेंगे. सब लोग कर रहे हैं, यू नो, लेकिन पता नहीं कि हर एक बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कितना है. लेकिन सब लोगों ने सोचा कि हम सोशल इंटरेक्शन पर काम करेंगे. दिस इज हैपनिंग नाउअडेज, but some, without having any evaluation, without understanding where the child is actually is operating from. Yeah, some says that some medical treatment is going to work, so I'm also going for that medical treatment. और पिछले 8 महीने से I'm going for those medical treatment. It can be homeopathy, can be medicine, can be some kind of any kind of a drugs. I don't have any evaluation, I don't have anything, लेकिन वो drugs चल रहे हैं, you know. 5 पेरेंट्स एक साथ ले रहे हैं, you know. पिछले 4 ले रहे थे, इसलिए मैं 5वां मैं भी गया वहां पर. Where these goals are coming from? Yeah. Who influences your child goals? हमारे बच्चे के गोल्स कौन इन्फ्लुएंस करता है? थेरेपिस्ट इन्फ्लुएंस करता है, पेरेंट इन्फ्लुएंस करता है, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, या कोई स्कूल इन्फ्लुएंस करता है? If you have any other choice, you can put it in the You chat can put in box the chat also. box. Yes, Yes. yes. Because I've just listed the whatever came in my mind and sir told me. So if you get inspired from some other things,
So you can put it here. Like one of my friend, her child with special need, she is putting in 2 year cycling classes. तो वो साइकिलिंग के लिए जाता है, उसको साइकिलिंग आना शुरू हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने भी मेरे बच्चे को वहां पर साइकिलिंग के लिए डाल दिया, irrespective of whether he need that cycling, whether he need it, whether he need it, I don't know, but सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने भी किया। There is one thing in the chat box that child's current situation and surrounding environment decides the child's goal. Child's current situation and surrounding environment decides child goals. Yes, absolutely. Child's current situation contains many things. His current age, his stage of development, you know, his age, his stage of development. शायद 2 ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनका सोशल एज, क्रोनोलॉजिकल एज अलग अलग है, किसी का 8 साल है और किसी का 3 या 4 साल है, और दोनों का सोशल एज सेम है 2 साल। ओके, तो 8 साल के बच्चे का भी सोशल एज 2 साल है और 3 या 4 साल के बच्चे का भी सोशल एज 2 साल है। दोनों का सोशल एज सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गोल्स सेम होने चाहिए। ओके, क्योंकि 8 साल का बच्चा अभी प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है और उसमें वो मैच्योरिटी आने से पहले उसमें इंडिपेंडेंट सोशल स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। 4 साल के बच्चे के पास बहुत टाइम है, हम उसके बहुत सारे प्ले स्किल्स या हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंटल पैटर्न तक उसके से लेकर उसको आगे लेके जा सकते हैं। यू नो, दोनों चाइल्ड, दोनों की कंडीशन सेम होने के बावजूद हमें एक्चुअली गोल्स अलग अलग रखने हैं। या अगर मैं ऐसे कहूंगा कि दोनों बच्चे हैं, 5 साल के हैं, दोनों को ऑटिज्म है, यू नो, और लेकिन दोनों को सेम लेवल का ऑटिज्म है, लेकिन किसी का सोशल एज अलग है, किसी का सोशल एज अलग है, शायद सोशल एज के माध्यम से नहीं, इसके सेंसरी नीड्स अलग है, इसके मॉड्यूलेशन डिसफंक्शन, इसका रजिस्ट्रेशन डिसफंक्शन है। ओके, इसको सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम है, इसको, ये तो सेल्फ रेगुलेटेड है लेकिन थोड़ा सा लर्न करने में स्लोनेस करता है। उनके गोल्स सेम नहीं होंगे, 2 सेम एज के बच्चों के गोल्स सेम नहीं होंगे। ये मैटर करेगा सिचुएशन इक्वल टू their current condition with respect to age, their chronological age, their developmental stage, their dysfunctions, their strengths, their weaknesses, familial conditions. ओके, ये सारी चीजें मैटर करेगी। इनफैक्ट पेरेंट्स का प्रोफेशन भी मैटर करेगा। इनफैक्ट वो 2 टायर सिटी में रहते हैं, वो 3 टायर सिटी में रहते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, ये भी मैटर करेगा कि वो बच्चे का सोशल गोल्स क्या होने चाहिए। ओके, सो देयर आर 21 people have these things out of 40. So therapist everyone are 10, parents, some parent friend है, उनसे आया हुआ गोल है 5 parents are saying around 24-25%. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है 2, व्हाट्सएप ग्रुप से आया हुआ है 1, एंड स्कूल से आए हुए 3 है। यू नो व्हाट यू फील कि ये जो गोल्स हैं, ये गोल्स कैसे आने चाहिए, क्या होना चाहिए गोल्स के पहले? शुड दे बी इवैल्यूएशन बेस्ड, शुड दे बी परफॉर्मेंस बेस्ड, और शुड दे बी माय एक्सपेक्टेशन बेस्ड? ये इसके लिए मुझे पोल रखने की जरूरत नहीं है, ये आप मुझे टाइप भी कर सकते हैं। गोल्स इवैल्यूएशन, मेरे परफॉर्मेंस, जो दूसरे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके आधार पर होना चाहिए, और तीसरा मेरे डिजायर्स के आधार पर होना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि उसने ऐसा करना चाहिए। जनरली गोल्स 3 तरीके से आता है। एक, इवैल्यूएशन बेस्ड कि बच्चे का एक्चुअल करंट कंडीशन ये है। दूसरा, दूसरे बच्चे उस क्लास में ये कर रहे हैं तो मेरे बच्चे ने भी वैसे ही करना चाहिए। ओके, और तीसरा, वो सब कुछ छोड़ दो, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ने पैरी पौना करना चाहिए, बस खत्म, उसने पैरी पौना आना चाहिए। ओके, बाकी कुछ नहीं, वो हमारा कल्चर है, उसने वो करना चाहिए। क्योंकि घर में बड़ों की इज्जत रखी जाती है, उसमें पैरी पौना आना चाहिए। आई एम गिव अ वेरी बेसिक एग्जांपल, दिस नॉट आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द पेरेंट ओनली शेयर दिस, वो डॉक्टर छोड़ दो, उसको पैरी पौना आना चाहिए बस, राइट? So how many of you think evaluation based? I believe everybody should think evaluation based. Okay, it is very important that self-diagnosed problem and self-diagnosed things will never lead us to clarity. It will entangle us
for times, lot of time, maybe months, maybe years and years, parent gets entangled into that problem and self resolution, you know. So this is something which I believe that goals coming from evaluation. What do you think? This evaluation you should understand or evaluation आपको understand करने की जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है? डॉक्टर निकिता asked this very nicely said. You have to ask question. क्या आपको ये इवैल्यूएशन समझ में आना चाहिए या आपको इवैल्यूएशन नहीं समझे तो भी चलेगा? हाँ, कुछ तो पेपर पे आया है तो हम लोगों ने अभी इसके ऊपर कर दिया, किया होगा उन्होंने कुछ तो। इवैल्यूएशन पेरेंट को समझना जरूरी है या नहीं है? जो भी टेस्ट किया है या जो भी आपने असेसमेंट किया है, क्या वो पेरेंट का राइट है कि बाबा मुझे समझना चाहिए कि आपने जो भी इवैल्यूएट किया है, आपने ईईजी किया है, ईसीजी किया है, जो भी किया है, ये मुझे समझना जरूरी है या नहीं है? या चल कर दो जो भी आप करना है वो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Parents should know what evaluation is done, right? And why evaluation is done. Most of the times nowadays, there are many people are asking the parents to do genetic testing. आप करो, उसका इवैल्यूएशन से कोई संबंध ही नहीं है, बट जस्ट फॉर देयर स्टडीज वो वो प्रोफेशनल को कुछ स्टडी करनी है, इसके लिए ही इज आस्किंग टू डू इवैल्यूएट हिज जेनेटिक स्टडीज। इज दैट राइट? नो, नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी कि ये अगर टेस्ट मैंने करनी चाहिए तो मैंने क्यों करना चाहिए, व्हाई आई शुड डू दिस टेस्ट। आई कम बैक, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम है माय चाइल्ड इज नॉट कम्युनिकेटिंग, माय चाइल्ड इज नॉट कम्युनिकेटिंग, दैट्स व्हाई आई कम टू यू। इफ आई कम टू यू, okay, the therapist says we have to, therapist says, the professional says, the doctor says we have to evaluate the child. Okay, tell me why I should evaluate this. Okay, why I should evaluate, what this evaluation help me, my child and your therapy. आपके थेरेपी को भी ये इवैल्यूएशन कैसे मदद करेगा? थेरेपिस्ट, द डॉक्टर हैज टू एक्सप्लेन यू कि ये इवैल्यूएशन अगर मैं कर रहा हूं तो वो क्यों कर रहा है। मैं वैप्स कर रहा हूं, ओके, मैं वीएसएमएस कार्स कर रहा हूं, मैं एडीएचडी कर रहा हूं, ओके, ये टेस्ट मैं कर रहा हूं, या मैं चाइल्डहुड एपरसेप्शन टेस्ट कर रहा हूं, ओके, या मैं टॉडलर एपरसेप्शन टेस्ट कर रहा हूं। ये टेस्ट अगर मैं आईक्यू कर रहा हूं, मैं एसक्यू कर रहा हूं, मैं ईक्यू कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? यू नो, व्हाट डज इट मीन? इस टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? ये अगर टेस्ट करने से बच्चे को या बच्चे की करंट कंडीशन को कैसे समझा जाएगा? अगर समझा जाएगा तो ये टेस्ट से आगे क्या फायदा होगा? या सिर्फ टेस्ट करने के लिए करना है? एमआरआई, ब्रेन का एमआरआई निकाल दो, ब्रेन का एमआरआई निकाल के रखा, लेकिन उसके आधार पर कोई आगे ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो व्हाई आई शुड डू द एमआरआई? व्हाई आई शुड स्पेंड 7, 8, 10, 12,000? ओके, that is very important. Treatment is happening. How much I am understanding that treatment? Okay, I know I'm talking about new year resolution. You have to become inquisitive, because nowadays अगर मैं पोल डालूंगा तो there are 90% people are operating from half knowledge or quack knowledge, or just for working on somebody's these things. You know, I'm very not thoughtfully, but knowingly saying that 90% people are actually doing just to do the treatment, but not moving towards resolution. Resolution is a kind of a transformation from one stage I'm going to another stage of the life. That is resolution. Last year I was actually operating from this kind of a stage, my family was operating from this kind of a stage. This year my family has moved ahead, my child is interacting with me, my child has started playing with other kids, my child is actually going to school, he sits for 1 hour, 3 hours के लिए नहीं बैठता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था वो 1 hour ही बैठना चाहिए, बाकी के जो भी करिकुलम है मैं स्कूल से लेता हूं, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। आई एम गोइंग एज पर द गोल ऑफ माई थेरेपिस्ट, आई एम गोइंग द गोल एज पर द प्रोफेशनल हैज टोल्ड मी. And now his evaluation says that the receptive communication comes to, he is now 7 years, but his receptive communication is coming to like 2.5 years. His expressive communication is coming like a quarter to 2 years. He's just uttering words, but his understanding is improved, is like a 2.5 years. His social interaction is like 2 to 3 years.
His ADL skills are, he is very much independent. वो अपने खुद से सारी चीजें करता है. His independent skills is like 5 years. Okay. Now based on that, all the goals are set. And based on that, I know where we are going to reach at the end of the year. This is very important, parents. Do you agree with me? Now, before I end it today, okay, before I ask you a question, goals are supposed to be a developmentally oriented or performance oriented. I would like to give you two goals. मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ. This is one goal. Second goal, okay, I am just writing. The child should start responding to. I have not written complete goal, but next 2.5 months, the child should start responding. I'm talking about a 3-year-old child just came to me diagnosed with autism recently, and child should start responding to parents when they call from another room. Should come and connect with the parent. जिस parent ने उसको बुलाया है उसी को उसने देखना चाहिए. इसका मतलब उसको मम्मी का आवाज पापा का आवाज पता होना चाहिए और उसने मम्मी को जाके आई कांटेक्ट करना चाहिए. ओके, और ये 10 बार बुलाने पर एटलीस्ट 8 बार ये होना चाहिए. ओके, इन कमिंग 3 months. ओके, और चाइल्ड विल टू आवर्स इन द स्कूल. इसमें से कौन सा डिजायर है, पहला वाला और दूसरा वाला, कौन सा गोल है और कौन सा डिजायर है? No, it is sorry parents, it is for 1 hour only, but we had to go for 15 minutes. हमें थोड़ा सा. Second is desire. That's right. You're absolutely right. The first one is a goal. It is specific, measurable, achievable, time bound, and realistic. Second one is just a desire कि उसने 2 घंटा बैठना चाहिए. 2 घंटा बैठना चाहिए तो क्या वो उसको अगर कुछ ट्रांसक्विलाइजर दिया, आई मीन आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट सम काइंड ऑफ नींद में जाके बैठा है, दैट इज नॉट अ गोल. दैट इज नॉट अ गोल डेवलपमेंट. In that 2 hours, how the child is responding, how the child is, what the exactly child is doing, how the child is understanding the environment, that matters development. So I would like to continue this next week, Harshali. Yes, and we'll continue the Empower series in this year. Yes, Dr. Nikita, do you agree with me, parents? We'll Yes. stop here and we'll continue this, because I always believe the resolution and all the things, a new year, I mean, any resolution comes with some kind of evaluation, absolute right evaluation, to understand, to bring the clarity about the problem. Ground, जब तक हम ग्राउंड तक नहीं आते, जब तक वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक हमने वो बच्चे को टच भी नहीं करना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
and then only autism, any kind of a childhood disorder can lead to a wonderful life in the family. You know, we are going to discuss about the self resolution also, but in coming weeks we will definitely discuss, because 1 year resolution cannot happen in just 1 hour, but at least वो clarity हर एक को आना चाहिए. Thank you for the day. Thank you. Wish you very happy New Year, parents, and I believe that I will be able to bring clarity in all of you. Thank you. Thank you, Asha. Thank you so much, sir. I mean, I can so much relate to this today's session because many a times we work. I mean, I'm the biggest example. I always say that I was also working. I mean, not towards goal. With just whatever coming is जो भी आ रहा था उस पे काम करते चले जाए. I will share the experience in detail, but मैंने भी ये बहुत साल किया है और उसी आई मीन विद दैट फाउंडेशन ओनली कि मैंने जो हैपेजाइडली काम करना शुरू किया था और कुछ पता नहीं था कहाँ जा रहे, जो जहाँ ले जा रहे वहीं ले जा रहे, उसी पे आज ही के दिन हमने ये फाउंडेशन को आज स्निक का फाउंडेशन डे भी है. सो टुडे ओनली वी केप्ट आई मीन स्टार्टेड दिस फाउंडेशन टू गाइड द पेरेंट्स ओनली बिकॉज सब हेवायर जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में. मैंने देखा है जिसने जो लाया, जो ट्रीटमेंट लाया, होम्योपैथी लाओ, फिर ये लाओ, फिर ये पानी पिलाओ, इसके पास ले जाओ. सो कैमल का दूध भी पिलाया है और सब कुछ किया है पेरेंट्स ने, आई एम श्योर. सो टू गिव द राइट डायरेक्शन एंड टू गिव गोल भी अगर सेट करने हैं, वो भी कैसे करने हैं ये भी नहीं पता होता है. So, really, I mean, I mean, I cannot express my thanks to CRC and Dr. Sumit sir to, I mean, how he guided me, how whole team is with me for this. So I would like Dr. Nikita to go ahead with today's session, please. Yes, sir. Yes, thank you, Harshali ma'am. Thank you all the parents, and thank you, Dr. Sumit, for such a wonderful starting of the year. So yes, now I think we all will have a direction where we are moving and how we are moving. Today is just a glimpse of the direction that we have started. The continuing series will guide us much more towards a path to the development of the child. I would like to request all the parents, if you have any further questions or queries, there is a number given on the chat box where you can definitely connect to us for the further questions and queries. Thank you so much. I hope we all had a very knowledgeable roller coaster time, and we are all waiting for the next session for the next week with a lot of questions, queries in our mind to learn more. Thank you so much, everyone. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye, everyone. Thank you, Team CRC. Thank you for doing this. Thank you so much and good night. Bye bye. Thank you, ma'am, for being with us. My pleasure, ma'am. Thank you.